Third question, if sin A equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. So we assume sin A equal to 3 upon 4, that is perpendicular upon hypotenuse. Sin A equal to 3 upon 4, that is the value sin A equal to 3 upon 4. Sin upon A is equal to 3 upon 4. So we take a right angle triangle according to that. Assume A, B, C, angle A. That is the perpendicular angle A, that is the perpendicular, so it is a perpendicular according to angle A, that is a perpendicular is 3 and hypotenuse is 4. So we find the value of base according to this right angle triangle. So take the value of AB equal to AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर. AC इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9, दैट इज 7. AB स्क्वायर इक्वल टू 7. सो AB इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7. सो वी टेक ओनली root plus 7, only take value. So we find the value of, this is a base according to A, this is the perpendicular and this is the hypotenuse according to angle A. So we find the value of cos A equal to perpendicular, टेक इन साइन में यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इक्वल टू ए बी एंड हाइपोटेनियस. ए बी इक्वल टू रूट 7, दैट इज हाइपोटेनियस 4, एंड टेक द वैल्यू ऑफ tan A. So base, perpendicular and hypotenuse are always same according to angle A. So we take the value of perpendicular upon base. Perpendicular equal to VC and base is equal to AB. So take the value VC equal to 3 and AB equal to root 7, that is 3 upon root 7. आप इसे अच्छे से देख सकते हैं. 3 upon root 7 is the value of tan A. We find the value of cos A and tan A. That is question solved.